Acha bhai, Assalamu alaikum guys. Hopefully you guys are going well. In last classes we have discussed kinematics. Kinematics हमने start करा था और kinematics में हमने ये discuss किया था कि in kinematics we'll be discussing three things. Number one, speed time graph. Number two is distance time graph, and number three is the mixed problem. That is the conversion of the speed time graph into a distance time graph. तो last class में हमने कुछ basic problem discuss करे थे. Now we'll move towards few more questions. Okay. Okay, let's start the following question. In the following question, we have been asked to find the acceleration for the last 10 seconds and the speed time graph is given to you. So speed हमारे पास है मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड्स में given है, and we have been asked to find acceleration for the first 10 सेकंड ये हमने calculate करना है. अगर first 10 सेकंड के लिए हम acceleration calculate करना चाहते हैं for the last 10 सेकंड, तो it means that we have to find the acceleration, and acceleration refers to gradient जैसे हमने previous lecture में पढ़ा था. तो last 10 second means that's the following one. अगर हम इस given line की last 10 second means we have to find the acceleration of a following line, और अगर हम इस line की acceleration calculate करना चाहते हैं तो we have to consider 2 points on the following line. अगर हम first point की coordinate की बात कर लें, the coordinate would be 90 90 50, और अगर हम last इस point coordinate की बात कर लें that would be 100 0. तो इन दैट केस हम एक्सेलरेशन के लिए ग्रेडियंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1. y2 माइनस y1 हो जाएगा 50 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 90 माइनस 100. On simplification that comes out to be 5 divided by negative 10. On simplification negative 50 divided by 10. On simplification that comes out to be negative 5 meter per second square. नेगेटिव साइन जैसा हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, दिस नेगेटिव साइन रेफर्स टू डीएक्सेलरेशन या रिटार्डेशन. ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 2, टोटल डिस्टेंस कवर्ड. अगर टोटल डिस्टेंस कवर्ड हम कैलकुलेट करना चाहते हैं फॉर पार्ट बी, वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ. तो फॉर फाइंडिंग द एरिया अंडर द फॉलोइंग ग्राफ वी हैव टू बाइफरकेट इनटू टू पार्ट्स. दो पार्ट्स में हम जो बाइफरकेट करेंगे, देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल बाइफरकेशन जो कि आपके पास इस क्वेश्चन में हो सकती हैं. मैं जो बाइफरकेशन यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट मैं इरेज कर देता हूँ वो सारी चीजें जो अभी हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, देन आगे बढ़ते हैं. लेट मी फर्स्ट इरेज द फॉलोइंग गिवन जो हमने सॉल्व करा था. आप लोग पॉज करके इस प्रीवियस पार्ट को कर सकते हैं. लेट मी फर्स्ट इरेज. For finding distance, that is part number 2, हम स्टार्ट करते हैं इस कंडीशन से. आई एम चेंजिंग द कलर. फर्स्ट मैं इस पार्ट का एरिया कैलकुलेट कर लूँ, दैट इज ट्रेपीजियम. देन मैं एरिया कैलकुलेट कर लूँ ऑफ द फॉलोइंग पार्ट, दैट इज ट्राइंगल. सो एडिंग बोथ द एरियाज आई गेट द टोटल डिस्टेंस कवर्ड. तो पार्ट 2 के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं. पार्ट 2 सॉल्यूशन. डिस्टेंस बराबर होगा एरिया ऑफ द फॉलोइंग ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ फॉलोइंग ट्राइंगल. अगर हम ट्रेपीजियम के एरिया की बात करें तो एज वी हैव डिस्कस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट. सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट. इसमें ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगी. द लेंथ ऑफ द दिस साइड is 20. The length of this side, that is this one, is 50. तो sum of parallel side हो गया. And the height is the parallel distance between the following side, that is this one. ये आप लोगों के पास हो जाएगा 90. Now comes towards area of triangle. Area of triangle का फॉर्मूला होता है half multiply by base multiply by height. Base is this one, that is 10, and height is 50. तो फाइनली आप इस कंप्लीट को सॉल्व कर लेंगे. मैं सॉल्व कर लेता हूँ. डेट कम्स आउट टू बी प्लस 3400. डेट कम्स आउट टू बी 3400 यूनिट. आप लोग मीटर यूज कर लेंगे. तो दैट कम्स आउट टू बी टोटल डिस्टेंस कवर्ड, दैट इज पार्ट 2. नाउ मूविंग टूवर्ड्स पार्ट 3, एवरेज स्पीड. एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए आप लोग कंडीशन यूज करते हैं.
that is total distance divided by total time. Total distance divided by total टाइम टेकन. तो कंडीशन के अकॉर्डिंगली टोटल डिस्टेंस आप लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं. मैं कलर चेंज कर रहा हूँ. टोटल डिस्टेंस कम्स आउट टू बी 3400 एंड टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी इज 100 सेकेंड. तो ऑन सॉल्विंग दैट कम्स आउट टू बी 34. सो इसकी एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी, दैट इज एवरेज स्पीड comes out to be 34 meters per second. Moving to one more question, then we will discuss distance time graph. Okay, let's move on towards the following question. The diagram is a speed time graph for the 20-second of a cyclist journey. You have been asked to find the distance covered in the first 16 second. तो अगर मैं first 16 second के आपसे distance covered की बात करूं, तो आप first 16 second के अंडर का एरिया calculate कर लोगे. तो this figure looks like a trapezium. तो अगर हम trapezium का एरिया calculate करना चाहें, तो distance would be area of the following trapezium. और ये trapezium कुछ इस तरह से ड्रॉ हो रहा है. ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट. इस कंडीशन में पैरेलल साइड एक तो है ये, another one is this one. This is one is from 0 till 16, तो मैं इसको 16 लिख देता हूँ. और ये साइड हो जाएगी आपके पास from 8 till 16, that comes out to be 8. और हाइट आपके पास ये होगी. इस कंडीशन में परपेंडिकुलर हाइट आपके पास ये होगी. तो हाइट कम्स आउट टू बी 9. परपेंडिकुलर हाइट कम्स आउट टू बी 9. तो ऑन सिंप्लीफिकेशन आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज 108. The distance comes out to be 108 meters. Next part में you have to find the acceleration when t is equals to 18. तब यहाँ पे एक different concept use होगा. फर्स्ट में जो गिवन मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करा, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करा, इसको इरेज कर रहा हूँ. तो मीन वाला आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं. आई एम इरेजिंग द फॉलोइंग पार्ट. अब पार्ट नंबर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आपने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है व्हेन द टाइम इज 1.18 seconds. अगर मैं 18 सेकंड की बात करूं, तो हेयर कम्स 18 सेकंड्स. यस और नो? यहाँ पे अगर आप डॉट करके देखें तो हेयर कम्स 18 सेकंड. ऐसा कि हमने पढ़ा था कि एक्सेलरेशन रेफर्स टू ग्रेडियंट एंड दैट्स द ग्रेडियंट ऑफ अ स्पीड टाइम ग्राफ. अब हमने ये भी डिस्कस किया था कि इफ यू हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड अ ग्रेडियंट ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, तो यू यूज 2 पॉइंट कंडीशन, दैट इज y2 minus y1 डिवाइडेड बाय x2 minus x1, या राइज बाय रन अप्रोच आप लोग यूज कर लेते हैं. बट राइट नाउ इन द फॉलोइंग कंडीशन, दिस इज अ कर्व. और कर्व का ग्रेडियंट कैलकुलेट करने के लिए आपने क्लासेस में कंडीशन पढ़ी होगी कि यू यूज द कंडीशन कि जब भी आप लोगों को किसी भी लाइक कर्व का ग्रेडियंट कैलकुलेट करना हो, so you draw a line and that line only touches that curve at a particular point, that particular point at which we have been asked to find a gradient. इस line को हम लोग tangent line का नाम देते हैं. Tangent is a line that only touches a curve at that particular point जिसपे हमें gradient या जो भी condition wise value होती है वो calculate करनी होती है. तो अगर मैं इस line का gradient calculate कर लूँ, तो obviously आने वाले gradient की value आपके पास relate करेगी उस पॉइंट पे ग्रेडियंट को. तो फर्स्ट में एक पॉइंट ये कंसिडर कर लेता हूँ जो परफेक्टली लाई कर रहा है, और एक ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेता हूँ. सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज 15 15 8, and the coordinate of this point is 20 11 20 11. So for finding this acceleration comes out to be y2 minus y1. तो आप कर लोगे 11 minus 8 divided by x2 minus x1, that comes out to be 20 minus 15. So acceleration at the falling point comes out to be 3 divided by 5, जिसको आप लोग 0.6 meters per second square या ms minus 2 भी लिख सकते हैं. Okay, that was the condition. Inshallah, in the next session we will start with distance time graph. Okay, thank you.